hash map, and so on are there. Okay. Now let's proceed. What is a dictionary? Now a dictionary is a collection which is unordered. जैसा हमने देखा last time कि ये unordered है, changeable है, and indexed है. In Python, dictionary are written with curly brackets. So हम लोग इसको कैसे mention करेंगे? Curly brackets बोलकर access करेंगे. So let's first do one of the simple dictionary program. So I'm doing a simple dictionary program for creating a dictionary. So if you see, I have told you it need to be placed in a curly bracket. अब इसमें और normal तुम्हारे list में difference क्या है कि यहाँ पर हम लोग कोई भी चीज का, for example, let us say we are talking about the names of students. So I can give name here and accordingly mention the name of the student and so on. Like age, I can mention the age. Fine. So what data structure is? It is an unordered, changeable and index, and it is represent using curly bracket. तो उसका representation एक और मेथड से देख लेते हैं. ये क्या है? यहाँ पर हम लोग की स्पेसिफाई करते हैं, उसके साथ में अकॉर्डिंगली वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं. सो यू कैन सी ईच की मैप टू वैल्यू. तो हर एक की के साथ में कुछ वैल्यू एसोसिएटेड होती है. दिस एसोसिएशन ऑफ की एंड वैल्यू इज कॉल्ड एज अ की वैल्यू पेयर. ओके. So we are going to now work on keys and correspondingly उसके values के साथ में हम लोग work करेंगे. Now dictionary can be created by placing sequence of element within curly brackets separated by commas. तो आप लोग कितने भी elements डाल सकते हैं. Only thing is that you need to separate it by commas. Okay, and it will help the key value pair in it. It can be duplicated whereas keys can't be repeated. Somebody has unmuted themselves or what? I can hear. Please unmute yourself. And do not unmute yourself. Mute yourself, people. And stop presenting. Somebody is presenting their screen. Shall I continue? People are able to see the screen because few people are saying can't see the screen. We can see, ma'am. Yeah, fine. I'll proceed further. Please, आप लोग अपने आप को unmute मत करना, mute रखना. Fine. Okay. Now let's proceed. There's a note over here for dictionary. Dictionary keys are case sensitive. Fine. They're sensitive, case sensitive. Same name but different cases of key will be treated distinctly. So very important point is this: whenever you are using dictionary, it is a case sensitive thing. So if you create something like this, now let's work on first creation. अगर मैंने यहाँ पे B small लिखा है, brand लिखा है, और next time मैंने अगर यहाँ पर capital B डाला, BRAND, this will be different as compared to the first one. So just see that this is case sensitive. Okay. So how to create a dictionary? If you see, this is the simple way to create a dictionary in which I'm giving the key and along with that I'm giving the values. Fine. तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल बनाया है डिक्शनरी जिसमें हम लोगों ने ब्रांड, मॉडल और ईयर लिया है और उसे हम लोगों ने प्रिंट किया है. फाइन. कैन यू जस्ट डू दिस मच सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर. डिक्शनरी क्रिएट करके रखना, फिर उस पर ऑपरेशंस करेंगे. Done, everyone? Okay. Now, this is a simple way to create a dictionary. Fine. So, what I will do is that I'll come in this. अब ये जो ऊपर का है, this distinct brand and this, with this we are going to create a dictionary. So let's execute the program. Okay. With this you can see it is created the dictionary. Okay. Now let's proceed for accessing the elements of the dictionary.
यहाँ तक सबका हो चुका है. अब accessing the element. If I want to access particular element of the dictionary, so see how I'm doing. I can do it in this way. X is equal to this dict, where this dict is the dictionary name, and in that I'm mentioning what values I want. So I can see if I want this model. Okay, so I'm giving within double quotes, and there is a square brackets over here which will return you the model. Okay, another method is that you can access by get. So you can see this dictionary is a dictionary name dot get. With this you will get the model name that is there. Fine, so let's execute this program. तो यहाँ पे देखो, ये पहला हमने सभी प्रिंट किया है डिक्शनरी को. उसके बाद में वी आर एक्सेसिंग द मॉडल. फाइन, that is Mustang, and the other method by which we are accessing the model. Fine. So here there are two methods by which we can access the contents or the values of a dictionary, by giving the dictionary name and then giving square bracket, or we can give by get function. Fine, execute the program. Ma'am, एक second. Jnaneshwari, please stop your screen presentation. ज्ञानेश्वरी, प्रेजेंटेशन बंद करो आपका. You can hear us, Naneshwari? People, you are not able to see the screen? No? मैम आपकी दिख रही है मैम. जिन्होंने पिन किया मैम आपको दिख रही है. Naneshwari, stop presenting. Others, what you'll do is you can just ping my screen. She's not listening actually, Naneshwari. You're not understanding, beta? Naneshwari. Naneshwari, kindly stop presenting your thing, your screen. मैम आप वापस प्रेजेंट कर दो. आप टॉप पे आ जाओगे नाम वापस से. Okay, fine. Let's proceed. So we were talking about that how to access the element of a dictionary. So here you can see with this, we can give the dictionary name within the square bracket. We can give whatever key is there. For that key correspondingly, we'll get the value. Also, we can have a get function with this dict is the dictionary name. And with this get, you will get for the corresponding key, the corresponding value that is associated with the dictionary. Fine. So here we have executed the program and seen that we can access for a model whatever is the corresponding value and other method for the same thing. Fine. Execute करके देखो और स्क्रीन मुझे शेयर करो, मैसेज करो चैट पे कि डन. Okay, let's proceed now. Now, how to change the values of the dictionaries. So you can see this is already, you don't have to write this again and again because only the same dictionary is being created. तो आप उसी के नीचे लिखना, बस आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या है ये. Now you can change the value at a particular point. So you can see if this dict is a dictionary name and I want to change the content of the year. So I have written the dictionary name within the square bracket. Whatever key I want to mention, here I have taken year,
and changing the value from 1964 to 2008. This is the way, and after that I'm just printing the content of the dictionary. Fine. With this, your values will be changed in the dictionary. People simultaneously do it so that you understand. Once you're done, write on the chat box so that I can proceed further. Okay, let's proceed now for. People are done, so I'll proceed with the further part. अब हम लोग for loop भी use कर सकते हैं डिक्शनरी में. So see how the for loop is used. The same dictionary we are using. Okay. अब इसमें हम लोग for loop लगा रहे हैं. For loop में हम लोग क्या करते हैं, जो भी in है, in देते हैं. Last time also we have seen for, while and so on. तो आप देखो जब भी हम लोग कोई चीज लिस्ट टपल एक्सेस करते हैं तो हम लोग उसमें in लगाते हैं. Fine. So here I am giving for x in this dictionary, यानी इस डिक्शनरी में जो भी रहेंगे तुम्हारे. अब इससे क्या होगा, आपके सिर्फ जो कीज है वो प्रिंट हो जाएंगे. ठीक है. अगर मुझे इस कीज के वैल्यूज प्रिंट करने होंगे तो यहाँ पे नीचे देखो मैंने कैसे किया है. दिस डिक्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट x. तो हर एक वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी. सी द डिफरेंस बिटवीन प्रिंटिंग द कीज एंड प्रिंटिंग द वैल्यूज. Over here, if you just have to print the keys, you're going to just access this dict and print x. With this, it will get all the values that are, all the keys that are there. And with printing the dictionary along with the value, you will get the content of the dictionary. तो यहाँ पर आपके keys मिलेंगे आपको और यहाँ पर आपके values मिलेंगे. So let's execute the program. For this, it's Python. ओके. तो देखो यहाँ पे पहले इसमें हमको क्या मिल रहा है, प्रिंटिंग ऑल कीज. ठीक है. अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिक्शनरी के की नेम्स प्रिंट किए और फिर उसके अंदर प्रिंटिंग ऑल वैल्यूज यहाँ पर हमने प्रिंट किए. So here there are two methods by which you can either print the keys or print the values. Now there is one more method by which the values can be printed, that is by using for loop dictionary name dot values. तो यहाँ पर अगर आप ऐसे दोगे या फिर dot values लेंगे, it will return one and the same. So here you can see in the output I am getting the same by this method and by using the value method. Clear? All of you please do the program. यहाँ पे सिर्फ हमने कीज प्रिंट किए. यहाँ पे नेक्स्ट इसमें हमने वैल्यूज प्रिंट किए. वैल्यूज प्रिंट करने के लिए डिक्शनरी नेम इन स्क्वायर ब्रैकेट जो भी तुम्हारा एक्स फॉर लूप में लगा रहे वो यूज कर सकते हैं. फाइन. और दूसरा मेथड क्या है जिसमें हम लोग डॉट वैल्यूज बोलकर एक्सेस करेंगे. सो हियर यू कैन सी आई एम यूजिंग डॉट वैल्यूज. काइंडली डू दिस प्रोग्राम एंड शेयर ऑन चैट. Yes, once you're done, kindly update on chat. सबका आउटपुट आ रहा है ना प्रॉपर्ली? Okay. I've got on the chat that many of you all are done. So I'll proceed further. Now if exist यानी क्या, डिक्शनरी में वो पर्टिकुलर नाम अवेलेबल है या नहीं. Okay. So there is something here. If you can see, the same dictionary that we have used is there. Now we are checking whether the model key is there in this particular dictionary. Fine.
So what I'm doing, if model, that means I'm directly giving whatever is the key in this dictionary, then print the model is there. तो इससे क्या होगा, आपको if loop लगाकर पता चलेगा कि whether a particular key is there in the dictionary. So the condition given is if, then whatever key you want to mention in, and then dictionary name. Then print statement for printing whatever message you want to print. Let's execute this program. So it's saying Python if exist. Okay. Yes, model is one of the key in the dictionary. Now let's change this to say model 123. Now this will not exist. Fine. So it should throw accordingly. It will go into an else loop. I have not written an else, but we can write an else mentioning that print key does not exist. Fine. तो ये कंडीशन हम लोग दे सकते हैं. What is missing here is colon. We should give colon after this, otherwise it will throw an error. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा की डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया, मॉडल 1 2 3 दिया. तो ये सिंपल आपके इफ एल्स कंडीशन के जैसा रहता है, जिसमें हम लोग चेक कर सकते हैं कि की अवेलेबल है या नहीं. फाइन. यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. डू इट फास्ट. Yes, people are done. I'll proceed further then. अब लेंथ ऑफ डिक्शनरी निकालनी है मुझे, तो सिंपल जैसे हम लोग का लेंथ ऑफ टपल, लेंथ ऑफ लिस्ट है, उसी तरह यहाँ पर सिर्फ क्या है, लेंथ एंड यू गिव द डिक्शनरी नेम. ओके, द सेम डिक्शनरी दैट आई एम यूजिंग, एंड देन फाइंडिंग द आइटम्स, दैट इज की वैल्यू पेयर कितने हैं इसमें, ये हमें फाइंड करने के लिए, यानी यहाँ पर ब्रांड 1, मॉडल 2, year 3. So these are three numbers of key value pairs over here. With this len function, it will return the number of key value pairs that are there in a particular dictionary. So it should return three value. I'll return Python. Okay, तो देखो ये three value return कर रहा है. With len, we are returning the number of key value pairs that are there in the dictionary. It is not talking only about one key, it's talking about the number of key value pair. इसका मतलब ये, अगर यहाँ पर तुम कुछ भी लिखो, okay, whatever you write, number of brands, it does not matter, number of key and value pair that will be returned by the len function of dictionary. Okay, let's proceed now adding contents to the dictionary. अभी यहाँ पर मुझे कंटेंट्स ऐड करना है ना, आइटम्स ऐड करना है मेरे डिक्शनरी में. तो व्हाट आई नीड टू फर्स्ट डू इज दैट आई नीड टू फर्स्ट गिव दी की, यानी जैसा यहाँ पे ब्रांड दिया है वो मुझे वो देना पड़ेगा. अकॉर्डिंगली उसके साथ में मुझे वैल्यूज भी मेंशन करनी पड़ेगी. तो हियर यू कैन सी द फर्स्ट डिक्शनरी ओनली वी आर यूजिंग. इन दिस डिक्ट कलर, मैंने एक नया की डाल दिया, उसके साथ में रेड ये वैल्यू डाल दिया. ओके, so with this we can add the element to the dictionary. Fine, so let's execute the program. ठीक है, तो देखो यहाँ पर लास्ट में आपका कलर रेड आ गया, which is adding the contents to the dictionary. Execute this program.
Done. Kindly update on the chat box if it is done. Fine. Now let's come to removing the elements from the dictionary. There are different methods to remove. So you can see there is a pop method. Okay. अभी यहाँ पर जो भी तुम specify कर रहे होगे key value, that will be removed. Okay. So with pop method, the specific key value will be removed. Now there is another method, pop item. Pop item क्या करेगा? जो तुम्हारा लास्ट रहेगा, लास्ट इंसर्टेड जो भी एलिमेंट रहेगा वो रिमूव हो जाएगा यूजिंग पॉप आइटम. द डिफरेंस बिटवीन पॉप एंड पॉप आइटम इज दैट पॉप में हम लोग यहाँ पर की स्पेसिफाई कर सकते हैं, whereas pop item will remove the last element from the last inserted element from the dictionary. Fine. अभी तो देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट केस में मॉडल रिमूव किया है. ओके, so let's execute the first part and check. I'll comment this part. फर्स्ट मेथड हम लोग कर देख रहे हैं अभी, जिसमें हमें क्या करना है, मॉडल को पॉप करना है. फाइन. सो हम एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा एक्चुअली ब्रांड, मॉडल एंड ईयर था. सो नाउ द मॉडल इज बीन रिमूव्ड विद द पॉप एलिमेंट. ओके, नाउ लेट्स सी द अदर पार्ट in which you have to use the pop item element. So I'm again using the same dictionary, this dict, brand, model, year. Okay, and then I'm using this dict pop item. तो यहां से हम लोग पॉप करेंगे भी एलिमेंट्स हमारे. ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट वाले, इसमें हम लोग का क्या हो गया था, मॉडल चला गया by first method. Okay, by pop method. In the second method, year is been removed. Why year is been removed? Because year was the last item that was been inserted. So I can just write here using pop item. Okay, what is the condition? And this was using simple pop, using pop method. Fine. So it becomes easier for you all to understand. So I've used same dictionary, and then by executing by both the pop method and pop item method, I have done this. ठीक है, मिल रहा है. अब एग्जीक्यूट कर लो प्रोग्राम. Anybody any issue, then you can discuss with me. Gnaneshwari, you again presenting the screen. Okay, done. I can see few messages that are there. We're done. Fine. किसी को कोई issue होगा तो you can write in the chat box so that I understand if any query is there. Okay, fine. Let's proceed now. Delete dictionary. ठीक है, अब delete dictionary से हम लोग क्या कर सकते हैं, कीवर्ड रिमूव कर सकते हैं विद स्पेसिफिक नेम. तो यहाँ पर देखो हमने डिक्शनरी के जो मॉडल का कीवर्ड है वो डिलीट किया, या फिर हम पूरी डिक्शनरी भी डिलीट कर सकते हैं. So you can see there is a delete this dict. So there is a difference between this delete and this delete. In this delete, what we are doing is that we are deleting the model key and the values of that. And this delete, you can see below line number 19, it says that delete this entire dictionary. Fine. So let's first execute the first part of it. I'm commenting this. तो देखो पहले पार्ट में हमने क्या किया, ये मॉडल को डिलीट करना है हमें. फाइन. सो आई एम डिलीटिंग दिस पार्ट.
Python and executing the program. So you can see the model is being deleted from here. तो यहाँ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी की और उसके करस्पॉन्डिंगली वैल्यू हम लोग डिलीट कर सकते हैं यूजिंग दी delete function. Okay, and I have told you we can delete an entire dictionary by using the delete function. So this is the method by which we can delete. I have created the dictionary again here and then delete the dictionary. Now what will happen with this? अगर delete करने के बाद में मुझको output आएगा क्या, यहाँ कोई chat box में लिखना, after putting this delete dictionary, what output I will get for this print? कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में कोई लिख सकता है क्या हो सकता है? हाँ, डिक्शनरी इज नॉट डिफाइंड. समबडी हैज जस्ट रिटन करेक्ट आंसर. डिक्शनरी इज नॉट डिफाइंड. क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि क्या हो जाएगा इस केस में, जब तुम लोग इस ये वाला डिलीट कर रहे हो, इस एंटायर डिक्शनरी डिलीट हो जा रही है, डिलीट होने के बाद में यू शुड नॉट गेट एन आउटपुट. इट विल क्रिएट एन एरर सेइंग दैट डिक्शनरी डज नॉट एग्जिस्ट, इजंट इट? अगर आपने एक पर्टिकुलर की डिलीट किया फाइन, फिर भी डिक्शनरी अवेलेबल है, इजंट इट? उसमें बाकी के तुम्हारे की वैल्यू पेयर है, लेकिन जब तुमने एंटायर डिक्शनरी को अगर डिलीट किया तो उसको प्रिंट नहीं कर पाएंगे, इजंट इट? सो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम इट विल बी giving an error. I have not saved this. I'll just save it. Okay. I'll just save. So here it is giving an error. The dictionary is not defined. क्योंकि मैंने पूरी डिक्शनरी को डिलीट किया और फिर उसको प्रिंट करने की कोशिश की है, जिसके थ्रू वो एरर दे रहा है. Done? All are done with this? Can you just execute and check it? Fine. All of you have done. Now let's come to clear dictionary. Fine. There is a clear dictionary which empties the dictionary. यानी डिक्शनरी में जो भी कंटेंट्स रहेंगे उस पूरे कंटेंट्स को वो क्लियर कर देगा. So the function used is clear. So dictionary name dot clear will clear the dictionary. Okay. Clear करने के बाद में print में क्या आएगा अभी? Will it give an error? आदिति वो एरर देगा क्या? What it will give? Can somebody tell me? Yes, people have written in chat box correctly that it should return an empty, isn't it? So you can see empty dictionary has been written. People have written in the answers empty dictionary has been written. अभी empty क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने क्या किया कि उसको close कर delete कर दिया contents, and then while you're printing it will not throw an error because dictionary exists but only the contents are being clear from that particular dictionary. So let's execute Python. तो ये रहा आपकी एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न हो रही है. फाइन. नाउ कॉपी द कंटेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी. हम लोग डिक्शनरी के कंटेंट्स कैसे कॉपी कर सकते हैं? सो देयर आर, so you can see you cannot copy a dictionary simply by typing dic2 is equal to dic1. ऐसे क्या करेंगे हम? dictionary2 equals to dictionary1, तो क्या हो जाएगा? उसका पॉइंटर पॉइंट करेगा. ओके. डिक्शनरी 2 को डिक्शनरी 1 का पॉइंटर पॉइंट करेगा, यानी जो भी तुम रिफ्लेक्ट करोगे डिक्शनरी 2 में फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा डिक्शनरी 1 में. ओके, बट दिस इज नॉट द केस. वंस यू कॉपी इट शुड बी कॉपीड एंड नेक्स्ट टाइम डिक्शनरी 1 शुड बी इंडिविजुअल एंड डिक्शनरी 2 शुड बी इंडिविजुअल. तो हम लोग ऐसे डायरेक्टली dic2 इज इक्वल टू dic1 नहीं यूज कर सकते हैं. सो देयर इज अ मेथड बाय विच वी कैन डू. हियर इज द मेथड. ये हम लोग की डिक्शनरी हमने क्रिएट की, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट डॉट कॉपी करोगे तो कंटेंट सारे माय डिक्शनरी में आ जाएगा और फिर हमने प्रिंट किया. लेकिन इसके बदले अगर हम ऐसे करते हैं माय डिक equals to this dic will be completely incorrect because in this case only the pointers will be pointing and anything made changes to my dict will be reflected to this dict, but this should not happen.
कॉपी करने के बाद में दोनों भी अपना अपना इंडिविजुअल वर्क करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कॉपी कमांड यूज कर सकते हैं, डॉट कॉपी. विद दिस कंटेंट विल बी कॉपीड टू माय डिक्शनरी. फाइन. नाउ अनदर मेथड टू कॉपी द डिक्शनरी इज दैट, यहाँ पर डिक्शनरी लिख दो, DICT. ये इनबिल्ट फंक्शन होता है आपका. जिस डिक्शनरी में कॉपी करना है उसका नाम DICT इनबिल्ट फंक्शन, और जहां से कॉपी करना है दैट इज दिस डिक्ट should be written within the round bracket. With this, the content of the entire this dict dictionary will be transferred to my dict. Fine. Just execute this program. There are two methods by which it can be done. One is by using the copy method. Another one is by DICT inbuilt function of a dictionary. Execute this program. Once you're done, kindly update on the chat box. Okay, people are done. So you all understanding after executing the program, what will happen? The next dictionary should get the value of it. That's it. The copy will do. Copy command will do. ताकि ये जो है कंटेंट्स दूसरे डिक्शनरी में आ जाएंगे, और जो कि हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट हम लोग माई डिक्ट कर रहे हैं, so accordingly it should be printed. Okay. Now comes the nested dictionary. जैसे हमारा नेस्टेड लूप होता है वैसे ही नेस्टेड डिक्शनरी हो गया है. दैट इज अ डिक्शनरी में कंटेन मेनी डिक्शनरी. दिस इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड डिक्शनरी. तो हम लोग के जैसे फॉर लूप अभी तक हमने किया, वाइल लूप किया है, जिसमें एक वाइल लूप में दूसरा वाइल लूप डालते. सिमिलरली टू दैट you have a nested dictionary. So the method for nested dictionary is, you can give it in this way. So you can see this is my family. Within my family, this is the first dictionary that is there, which has child name, child 1 name and year. Another dictionary has a child 2 name and year, then child 3 name and year. Okay, so you can have within one dictionary define so many elements in it, and then you can print my family. That is, my family is the name of the original dictionary, under which there are n number of dictionary written with a key value pair. Fine. One more method of doing this is that you can give individually. तो देखो यहाँ पे मैंने child 1 individually लिखा है, child 2 individually लिखा है, and child 3 I have written it individually with an equal to sign mentioned here. And at last what I am doing is that I am just writing my family. Within my family I am giving the different dictionary name which should be called. Fine. देखो फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, एक ही डिक्शनरी को पहले जो है नाम दिया है इक्वल्स टू ओपनिंग करली ब्रैकेट, एंड दिस करली ब्रैकेट क्लोजिंग ईयर. ओके, ये जो ऊपर वाला ब्रैकेट है इट्स क्लोजिंग ईयर एट लाइन नंबर 15, एंड विद इन दैट आई हैव रिटन चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 and child 3. Okay, here it is comma separated, very important. Okay, comma separated रहता है ये. And then at last I have just printed the my family. With this your child 1, child 2, child 3 will 3 dictionaries will be printed. Okay, another method that I was saying was that आप individually लिख दो ऐसे, child 1, child 2 के contents, child 3 के contents, and then calling this particular in my family with the name of the dictionary. This is another method of using the nested dictionary. Fine. Can you just do the first one? First, at least do the first one. Next, you can understand. But yeah. Nested dictionary करना.
So you can create n number of dictionary based on the requirement of whatever program has been given to you all. And you can do by both the methods. Now in this case, the curly bracket matters, okay? Because this is where your first dictionary is ending. So you need to close your curly bracket here and with a comma separated. Similarly, for the second one, you need to close here with a comma separated. Okay. And then third, you don't have to give the comma because that's the end of the third dictionary and you don't have any other dictionary after that. Once you're done, kindly update on chat box. Okay, students are done. Shraddha Bhosle, kindly mute yourself. Okay, now we are done with this. Now let's proceed for the next topic, that is array. I have told you we will do with dictionaries and arrays. Now similar to our arrays in C programming, Java, C programming, C++ programming, we have an array in case of Python. An array is a collection of items stored at contiguous memory location. यानी continuous memory location पे जो हम store करते हैं वो हमारा array रहता है. Now the idea is to store multiple item of same type together. तो array में हम लोग क्या करते हैं, same data type के items place कर सकते हैं. So this makes it easier to calculate the position of each element by simply adding an offset to the base value. That is the memory location of the first element of array, generally denoted by the name of the array. तो array जैसा हमारे normal C++ प्रोग्रामिंग में रहता है जिसमें सेम डेटा टाइप्स हम लोग इंक्लूड करते हैं और जो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे हम लोग स्टोर करते हैं. That's what an array is. Now while creating an array, you need to import an array module. हम लोग को एक array module import करना पड़ता है और फिर उसके थ्रू हम लोग array प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. और कैलकुलेशन ऑफ array भी थोड़ा डिफरेंट रहता है कि उसमें हम लोगों को दूसरे मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने होते हैं. So let's see how to create a simple array program. So you can see for creating an array, I am importing ARR. Okay, import array as ARR. मैंने array module को import किया है. Fine. After that, what I'm doing, I'm taking this ARR which I have taken and dot array. इससे हम specify कर रहे हैं कि अभी हमारा ये array है और इसमें हम लोगों ने 1 to 3 which is an integer type I have stored. So I have created a array with array module and object is ARR. Okay, और यहाँ पे मैंने सब integer data type pass किए हैं. Okay, similarly to this we can also have creation of float. तो आप देख रहे हो लाइन नंबर 12 पे मैंने float type लिया है, यहाँ पर मैंने integer लिया है. All the data type should be same. So this was an integer data type. Here I am giving the float data type. So b is equal to ARR dot array, and then I have given the float data type to whatever the array is being created. Okay. For printing the array, we can use for loop. Okay. For loop के लिए हम लोग कैसे करते हैं? For I in range. Okay. So I in range 0 to 3, यानी 0 से स्टार्ट होकर 3 तक जाएगा. 3 मतलब it will be -1, so it will be 0, 1, 2. Index will be 0 for 1 number, for 2 number it will be 1, for 3 number it will be 2. So this will take the value of 0 to 3 minus 1, which will be equals to 2, and then it is going to print the element. Again you can see for the for loop the print statement ये वाला print मैंने अंदर डाला है. Fine. And then this blank print I have given, you can skip this also, not an issue. और उसके बाद में ये हमने print किया. So this indentation will matter here. With this we are printing the value. Now for float, same thing we are going to do.
we have taken the float values, fine, and then again using for loop I have printed the float content. Okay, clear to everyone? Can you just create an array and print the element of the array and let me know what is printed on the screen? Once you're done, kindly update on the screen. So you should get an output of the array. So here the new created array is 1 2 3 and new created array 2.5. तो हम लोगों ने integer type का एक array create किया और float type का एक array create किया. You should get something like this. All are done? So you can see there are different data types, Python types are there, and number of bytes that are required. So here you can see integer, 1 byte is required. For Unicode character, 2 bytes. Again for signed, unsigned, signed, short signed in, integer, unsigned short integer, signed integer. There are different bytes that are required. So here I have mentioned everything. For double, see we are using D. Type code we are using D. And the number of bytes that are there are 8 bytes are there are it is required. So आप यहाँ पर देखते हो आपके कोड में भी मैंने यहाँ पर D मेंशन किया है. समझ रहे हो? यहाँ पर मैंने D मेंशन किया है. Whereas over here I have mentioned I. Okay. So this will take your 8 bytes for each storage. Now let's see the adding element to an array. Elements can be added to array by using the built-in insert function. तो यहाँ पे inbuilt insert function रहता है. Insert is used to insert one or more data element into an array. Based on the requirement, a new element can be added at the beginning, end or any given index of an array. तो हम लोग array में कहीं पे भी elements डाल सकते हैं. That is beginning, end और एनी गिवन इंडेक्स. तो हम लोग इंडेक्स स्पेसिफाई करके उस इंडेक्स पे भी एरे डाल सकते हैं. फिर अपेंड फंक्शन एक होता है टू ऐड द वैल्यूज एट द एंड ऑफ द एरे. अपेंड फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड द वैल्यूज एट द एंड ऑफ द फंक्शन. सो लेट्स सी हाउ टू इंसर्ट द एलिमेंट्स इनटू द एरे. ओके, so you can see again what we have done. We have imported the array. Okay, we have declared the array जैसे हमने पहले किया. ये integer type हमने किया है. Okay, now just printing the content before inserting. यहाँ पे मैंने पहला जो हमने प्रोग्राम किया सेम है. यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ printf स्टेटमेंट दिया है array before insertion. Okay, now after insertion, see यहाँ पर हमने insert कैसे किया है. We have to insert at second position 4. तो यहाँ पर insert value कैसे वर्क कर रहा है. यहाँ पे ये 2 will specify the position where it need to be inserted and this will specify what value need to be inserted. Fine. So if I execute this much part of the program after insertion, we'll take this also after insertion. So see this program. File, save as, insert dot py. Okay, so I'm executing insert dot py, python insert dot py. ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे
it has inserted 4 over here. So before it was 1, 2, 3, and after insertion it has become 1, 2, 4 and 3 because 4 is inserted. Clear? So how it has been inserted? तो इसने यहाँ पे 0, 1 और 2 जो यहाँ पर वैल्यू 3 को उसने शिफ्ट किया towards right side and then it has inserted 4 over here and then proceeded with 3 as it is. So it is inserting the element at the second position and the value that was given was 4. Fine. This was method of insertion. Now same way we can do for floating type. जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये मैंने फ्लोट का इनिशियलाइजेशन किया है एरे का और बिफोर insertion I've just printed it using a for loop. Okay, now I have added the element, you can see 4.4, but यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पर append फंक्शन किया है. append फंक्शन से क्या होता है कि हमें यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है कि कौन से पोजीशन पे है. जैसे ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पर पोजीशन 2 दिया है, उसके बाद में कॉमा लगाया है. विद दिस इट विल कम टू नो दैट 2 पोजीशन पे मुझे 4 इंसर्ट करना है, लेकिन ये इंसर्ट फंक्शन है. यहाँ पर अभी हम लोगों ने अपेंड फंक्शन यूज किया है. अपेंड फंक्शन में क्या करेगा, वो डायरेक्टली इसको लास्ट में इंसर्ट कर देगा, यानी जो भी एलिमेंट कंटेंट तुम डाल रहे हो उसको वो क्या करेगा, लास्ट में इंसर्ट कर देगा. ओके, आफ्टर दैट वी आर जस्ट प्रिंटिंग the array that is there. Okay, so let's execute the entire program and check it out. ठीक है, देखो पहले केस में बिफोर इंसर्शन 1, 2, 3 था, फिर सेकेंड पोजीशन पे उसने 4 को इंसर्ट किया और अपेंड फंक्शन से उसने डायरेक्ट 4.4 लास्ट में डाल दिया बिकॉज अपेंड फंक्शन विल इंसर्ट द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द एरे. फाइन, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. आप लोग सब एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम को. फर्स्ट एग्जीक्यूट टिल हियर, दैट इज लाइन नंबर 13 तक एग्जीक्यूट करो. And once you're done, I'll show you the below part, the next part of the program. Okay, few people are done. So let's see the next part also in which append has been used. You can use the floating array and then use an append function. Okay, and again print the content of the array B. Done, everyone? Okay, now let's proceed how to access the element of an array. Now again we are creating an array. Okay, now with this a is equal to arr dot array, we have created an array of the type I. To access an element, I just have to give the index along with the array name. जैसे हम लोग C programming में करते हैं, जिसमें हम लोग array with the index that we give, we're going to access the element of an array. So if I execute this program, I should get a value of 0. 0th location will give me 1. Then this will be 1, 2, and third location will return me 4. So let's execute this program.
Okay, so you can see the answer returned is 1 and 4, which will take the value from 0 onwards. Kindly do the program with me. Okay, people are done. So we'll proceed further. तो हमने देखा कि एक्सेस एलिमेंट ऑफ एन array इन ऑर्डर टू एक्सेस द array आइटम्स रिफर टू द इंडेक्स नंबर. तो हम लोग जो भी ये ऑपरेट इसमें है स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर देते हैं और इट शुड बी एन इंटीजर नंबर, देन ओनली इट विल रिटर्न द वैल्यू. ओके, नाउ रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम एन array. एलिमेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द array बाय यूजिंग बिल्ट इन रिमूव फंक्शन. तो जैसे यहाँ पर आपका अपेंड वगैरह फंक्शन है, वैसे यहाँ पे रिमूव फंक्शन है. सी इट्स सेइंग but an error arises if the element doesn't exist in the set. If the element is not there in the set, it will throw an error. Okay, remove method only removes one element at a time. To remove range of element, iteration is used. तो यहाँ पे for loop use करके हमें बहुत सारे elements अगर remove करना है तो हम for loop use करेंगे. Fine. Otherwise you can use the single remove function. For multiple remove, you'll use a for loop or any iteration while loop, and then you can remove the element. Then pop function can also be used to remove and return an element from an array. But by default, it remove only the last element of the array. So pop function से सिर्फ last element आपका remove होगा. To remove element from specific position of an array, index of the element is passed as an argument to the pop. So you can also, using pop, you can remove any other elements also apart from the last element. The only thing is that you should give the index number of that particular element that is there. Fine. There's an important note here. Remove method in list will only remove the first occurrence of the searched element. अगर लिस्ट यूज कर रहे हैं हम लोग तो ये क्या यूज करेगा, फर्स्ट एलिमेंट जो भी अकर होगा उसी को रिमूव करेगा. यानी मल्टीपल अकरेंस, एज यू हैव सीन लिस्ट क्या हो सकता है, मल्टीपल अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स हो सकता है. तो दैट कैन मल्टीपल अकरेंस कैन नॉट बी रिमूव्ड ओनली व्हेन the list is there. So let us say if the list is something like this, L is equals to 1 2 3 1 2 3. तो जो पहला अगर मैं सर्च कर रही होगी 1 and I am removing this element, so it will remove only the first one. It will not remove the remaining one that exists in the list using the remove function. Let's see one program for this, for removing an element. Okay. So here I am initializing an array. Okay. So this I'm printing my contents, and then I'm using the pop element to remove the second element from here. तो देखो यहाँ पर मैंने इंडेक्स स्पेसिफाई किया, मुझे सेकेंड एलिमेंट्स यहाँ से रिमूव करना है. ओके, सो कैन यू जस्ट गिव मी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम? कैन यू ऑल एग्जीक्यूट एंड चेक? कौन सा एलिमेंट्स रिमूव हो जाएगा एंड व्हाट इट विल बी प्रिंटेड? कैन यू जस्ट आउटपुट क्या आ रहा है चार्ट बॉक्स में प्रिंट करना. Yes, people have written in the chat box.
some contents. So they're getting 1 2 1 5 1 2 1 5. Okay, so what is happening is this 3 is being removed by popping the 2, because it will be like 0 1 2. So 3 will be removed and you'll get 1 2 1 5 as the output. Absolutely correct, those who are done. Okay, so let's, even I'll execute this program. So I'll get, after popping, 1 2 1 5. Okay, I have popped one more element, so this one was removed. So this is the output that you should get. 1 2 1 5 has been the output. This is where you can remove the elements. Okay, now let's come for slicing of array. In Python array there are multiple ways to print the whole array. Slicing मतलब क्या, हमको कोई चीज कोई रेंज में अगर प्रिंट करनी होगी, that is what it is called as a slicing. Okay, if I want to print say from 0 to 5, अगर मेरा 10 साइज का array रहेगा और मुझे 0 to 5 प्रिंट करना होगा, तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको स्लाइस कर सकते हैं, यानी हम लोग रेंज देकर उसको प्रिंट कर सकते हैं. दैट इज व्हाट इज द स्लाइसिंग इज. In Python array, there are multiple ways to print the whole array. With all elements, but to print a specimen from the array, we use a, तो हम लोग slice operation use करते हैं. Now slice operation is performed on array with the use of colon. We are using colon function. Fine. To print element from beginning to the range, we use colon index. अगर हमको beginning से ये करना है, स्टार्टिंग से प्रिंट करना है, तो कोलन के पहले कुछ नहीं देंगे हम लोग, और उसके बाद में मेंशन करेंगे कि किस रेंज तक हमें वैल्यू प्रिंट करनी है. फाइन. अगर उसी तरह from the end use we are going to give colon, and यहाँ पर देखो, यहाँ पे माइनस साइन लगा है. ओके, बिफोर इंडेक्स देयर इज माइनस. तो हम लोग वहां से प्रिंट कर सकते हैं कि लास्ट एलिमेंट से कितने एलिमेंट हमको प्रिंट करने हैं, जैसे हम लोगों ने टपल में भी किया था. इफ यू ऑल रिमेंबर, वी हैड डन वन प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग using tuples, and only the last elements were been printed, so there was -1 -2 so on printed. The same way we can do it here. Okay, now to print an element within a range, we use start index and end index. अगर हमको specific देना है तो start index या end index दे सकते हैं. Fine. And to print the whole list with the use of slicing operation, we just give colon, यानी उसका start और end कुछ नहीं देंगे. With this you will come to know कि ये हमको पूरे elements print करने हैं. Fine. And to print whole array in reverse order, we're just going to give 2 colons with a -1 sign over there. Okay, -1 we'll be mentioning. With this it will print the reverse order of the array. So let's see program for slicing an array. Now I have again taken the array, created the list. Fine. So this is creating L array, and then I have taken it as the type I, that means integer. फिर मैंने initial array को print किया है. अब मैं उसको slice कर रही हूँ with 3:8. Okay, so can you just execute this program and see what output you're going to get? Actually it should take from 3 to 8. 3 to 8 मतलब क्या? 0 जो 1 location रहेगा, 2, this 2 will take 1 location, 3 will take 2 location, 4 will take your 3rd location. So you should print 4 onwards till the 8 index. Just execute this program and check up till this point. चैट बॉक्स में डालना कि क्या आउटपुट आ रहा है आपका. Yes, somebody has written, see, they are getting the correct output 4, 5, 6, 7, 8. So it will take from the 3rd index till the 8th index. Okay, so 4, 5, 6, 7, it will go on printing till the 8th index. Clear? This is when you are giving the start end index and the end index to a particular array.
बराबर, जिसमें स्टार्ट और एंड इंडेक्स हमने दिया है। अभी ऐसे हो सकता है कि हम लोगों ने स्टार्ट और एंड नहीं दिया है, जैसे मैंने बताया डिफरेंट वे टू एक्सेस है। सो देयर इज वन मेथड इन विच यू कैन जस्ट गिव दी स्टार्ट and then print with colon the remaining element, and till end it should print all the elements. So this should return the fifth location, that is 0 1 2 3 4 5 6 onwards. All remaining element should be printed using 5 colon. Fine. Then you can give all the elements to be printed. As I have told you, सभी elements भी print कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या मेथड है सभी elements print करने का? So this is a within square bracket. You don't have to specify anything. So it will take all the elements that are there. So kindly do the slicing with the fifth index and all the elements. Just check whether you're getting the output. All people, please do the program because only last 2 days are remaining. After this, 2 days will be there, and you should have the thorough knowledge about Python. So after this workshop, you will really have hands-on on the Python programming. That's why we are giving you ample amount of time. Kindly tell me the output that is coming. Done? People are done. Okay, I'll execute this program. ठीक है, तो देखो पहले इसमें हमने जिसमें रेंज स्पेसिफाई किया था, तो वहां पर first is 3 to 8. You should get from 3 to 8 this answer 4 5 6 7 8. Then we had given the second condition in which we had given the index of 5. Fine. So it will return the output like this, in which it will take the value 6 7 till 10, क्योंकि end full completely लेगा। यहाँ पर हमने accordingly specify किया है कि colon के बाद में कुछ भी नहीं, यानी it will take all the entries. In the last one, we have not given starting and not given ending, so it should print all the elements that are there. Fine. All are done. You should get this output. It's done. I'll give it 1 more minute. All of you complete the program. Okay, let's proceed for searching an element. Okay. See, in order to search an element in array, we use Python inbuilt index method. So यहाँ पे index method है inbuilt, वो हम लोग search करते हैं. The function returns the index of the first occurrence of the value mentioned. So first occurrence जो भी उसका रहेगा, वो index वो return करेगा. Fine. So let's see the program for searching an array element. So for searching an array element, again I have created an array. Okay. Printed whatever is the array. Fine. So here I can see index of first occurrence of 2 is. So हम लोग क्या कर रहे हैं कि first occurrence of 2 कहां पर है ये चेक करना है हमें. So here we have used index in bracket 2. अगर मुझे first occurrence of 1 find out करना है, so I'm going to give first occurrence index of 1. So with this, it will return the index of that particular number where it is going to occur. So here, if I execute the program, I will get the value as, ठीक है, देखो first occurrence of 2 is 1. So if this is the list, you will take 1 will take 0th index, 2 will take the 1 index. So here I am getting the value of 1. Similarly, first occurrence of 1, अगर 1 कहां पर occur हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 0th index पे 1 occur हो रहा है. So it is going to return the first index where a particular element is occurring. Even though 1 is occurring at this position, that is the third position, but it is not taking that 0 1 2 third position 1 is taking.
Similarly, 2 is taking the fourth position, but it is returning only the first location at which a particular number is occurring using the index function. Yes, kindly execute this program and check. This part I have taken only for printing the array, so that on output screen you come to know what is the array that is there, and then you can accordingly check whether the index that you are getting is correct or not. Okay, now let's proceed for updating an element. In order to update an element in array, we simply reassign a new value to the desired index. यानी जिस index पे हमें new value चाहिए वहां पर हम लोग reassign करते हैं. Fine. So let's see for updation of an array how the program will work. So this is just printing the array. The initial part is just printing the array. Now updating the elements, you can see at second location, I have told that the index should be replaced by the value 6. So it will take 0, 1, 2, 3 should be replaced by value 6. Okay. So can you just execute this program and check how your value is changing? And give me the output what you're getting here. All of you kindly do the program. Yes, people are done with the program and they're getting the values. So they've got the values as 1, 2, 6. So you can see the element third has been replaced. I mean, 3 has been replaced by 6. Fine. Similarly, you can proceed with updation of any of the elements. So you can see array 4. That means the fourth index is being replaced by 8. And again, I have printed. So I'll get the output in this way. तो आप देख रहे हो पहला एलिमेंट आपका 1 2 3 1 2 5 था, जिसमें 3 को ये सेकंड इंडेक्स को हमने रिप्लेस किया 6 से. फाइन. उसके बाद में फोर्थ इंडेक्स को हमने रिप्लेस किया 8 से. दैट मींस दिस 2 will be replaced by 8, and here you can update the array in this way. Fine. All are done with the programming? Anybody has any issue in arrays and dictionaries? देखो अभी तक हमने सभी डेटा स्ट्रक्चर सीख लिए. लिस्ट, tuples, dictionaries, set. That was the inbuilt data structure that we have studied. We have also seen an array, how to define an array and how to use different functions of arrays. Do you all have any issue? Then you can just put on the chat so that I understand. Otherwise, we'll end the meeting for today. I think we have completed with the dictionaries and array part completely today. Shall I end the meeting then? You can quit the meeting. Those who are done and those who have issue, they can wait.
मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं? यस